Now class 12, we are focusing on the elevation in the boiling point. I have just made a sketch for it, and this particular container contains your solvent which is volatile in nature and a solute that is non-volatile in nature. Fine. So what happened if you are heating this container, then you will see that the water, if you are considering solvent as a water, it will evaporate and it will form vapor. But the solute being non-volatile, it will, after heating it up, it will reaches to the upper layer, but it will not switch out from the container. But the volatile solvent, it will reach to the surface of the container and it will be coming out. ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा because it's volatile in nature. But this is a non-volatile one, this solute. So if we are assuming it as A and B, and you know this particular container holds solute and solvent, that it means it is holding a solution. So we have a solution in it which is comprising of a solute which is non-volatile and solvent is volatile. This is one thing. Second thing is that if we are heating it, if you are heating a particular solvent which is volatile in nature, then you know I have already discussed that all the molecules over here will be of solvent which is volatile and they will easily form you the vapors. So you will get a vapor pressure over here more, right? But over here the vapor pressure will be decreased because you are adding the non-volatile solute to it. So what do you think, if suppose if it is water and it is being boiled over here 100 degree, you know it's boiling at 100 degree water, and it give you vapor pressure at 100 degree, but over here it will not give you the vapor pressure at 100 degree, it will take more temperature. So maybe possible instead of 100 you need 110 degree, so your temperature is rising up. So what is the scenario we come across with these two diagrams, that when you are adding a non-volatile solute to a volatile solvent, then the boiling point which you want to reach it, over here it is the vapor pressure is a point where you just get your boiling point. Okay, na? Boiling point is what, where you are getting your vapor pressure, the same thing. So point is that ki over here your boiling point is less and over here the boiling point is more, means to make, suppose if we are making a graph over here and if I want that temperature has been put over here and vapor pressure is here, if you are increasing the temperature the vapor pressure is increasing, this should be happened. But suppose if you are adding a non-volatile solute to it, so you want that basically this vapor pressure will reaches, when you will get a vapor pressure, when your vapor pressure of the solvent become equal to the atmospheric pressure. ठीक है, atmospheric pressure, then only you will get the vapor pressure. Or in other words you can say when you are heating up, you will get the vapor pressure when your particular liquid will boil. So at boiling point you will get the vapor pressure, but you have to heat the temperature till its vapor pressure of that solvent become equal to the vapor pressure of the atmospheric pressure, है ना, atmospheric pressure के बराबर हो जाए. So if you are adding a non-volatile solute to it, so means definitely a particular solvent now will give you the pressure when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, but it will not attain very easily. You have to raise the temperature. Suppose अब यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे आ रहा है कुछ टेम्परेचर, मानने की बात है 100 है, लेकिन अब 100 डिग्री है, ठीक है. बट वेन यू आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, अब टेम्परेचर आपका और हाई हो गया है, अब हो सकता है वो 100 से ऊपर चला जाए, हो सकता है 110 हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए, ठीक है ना. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ अ राइज इन द टेम्परेचर, तो दैट इज़ व्हाट योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसी चीज़ को आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. और इस ग्राफ को रिप्रेजेंट अगर हम कर लें, सपोज करो वी आर अज्यूमिंग एज अ टेम्परेचर ओवर हियर, वेपर प्रेशर इज ओवर हियर. सो सपोज करो हमारा कोई पर्टिकुलर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ, ठीक है, मैं ए पी लिख रही हूँ बट इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो योर सॉल्वेंट इज़ गिविंग योर दिस वे, ये ग्राफ आ रहा है एक सॉल्वेंट का, ठीक है. अब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब वो वेपर प्रेशर, अभी सपोज करो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ टेम्परेचर आपको मिल रहा है 100. अब आपने उसी सॉल्वेंट में, अब सोल्यूशन बन गया, आपने एक सॉल्यूट डाल दिया दैट इज़ अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, राइट. और आप उसको अब हीट कर रहे हैं, तो अब टेम्परेचर दिखा ना बढ़ा हुआ आ रहा है. वेपर प्रेशर तक तो पहुंचने के लिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंचने के लिए ही आपको वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया. अब और आगे ग्राफ पहुँच गया, इट्स मे बी 110. सो यू आर सीइंग देयर इज़ अ राइज इन द टेम्परेचर, और ये डिफरेंस आएगा, है ना, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास. सो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस, डिफरेंस इज नथिंग बट दैट इज़ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. वो क्या चीज़ हो जाती है आपकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट पे राइज हो, भाई ये आपका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, ये क्या हो गया, राइज इन द
particular boiling point of that solvent, because now it is holding not only the solvent, it is holding a solute whose nature is what? It is non-volatile. Now let's come upon the terms few things about boiling point. If you remember your classhood when you were small, that in your class 8 we used to say when the temperature at which a liquid boils, that is a boiling point. But now it's a different. A boiling point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, वही बात मैंने कही थी ना कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर ले जाना पड़ता है, तब आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है किसी चीज़ से. पहले हम लोग कहते थे कोई भी लिक्विड उठाया उसको हीट कर दीजिए, जब वो बॉयल हो जाए तो वो टेम्परेचर पे जब वो बॉयल हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट. And elevation we have always seen. So when you see the vapor pressure, what we come across, we have seen the vapor pressure of the solvent. आपने देखा था ना, initially it was large. A vapor pressure of solution क्या हुआ था, जो you have a solvent that was volatile in nature and it was containing a solute. We are just seeing it. That was non-volatile in nature. So whose vapor pressure is more, this or this? Its vapor pressure more, it was less. So vapor pressure of the solution will be less because it is holding a solute which is non-volatile in nature. Now we are focusing once again on the graph. This is the atmospheric pressures are there, different solutions are there. ठीक है, solvent है when it is volatile in nature. Solution हो गया जिसमें क्या हो गया, you are adding a non-volatile solute to it. ये solution 2 हमने लिए कुछ और assume करके. तो initially temperature आप देखिए, temperature क्या है इसका, basically T0 से represent हो रहा है, where your टेम्परेचर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, जब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है ना. फिर उसके बाद जब आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर देखिए बढ़ी, तो वही क्या हो रहा है, डिफरेंस दे रहा है आपको. सो लेट्स फोकस ऑन दैट पार्ट कि हाउ दिस डिफरेंस इज़ बीन कैलकुलेटेड. लेट्स फोकस ऑन इट. नाउ यू आर सीइंग जो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज़ मोर कंपैरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सो वी हैव सीन बॉइलिंग पॉइंट of the pure solvent we are assuming as T0, and boiling point of the solution we are assuming as Ts. तो डिफरेंस हमारा डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी बी से लिख के. तो आपका बड़ा कौन था, सोल्यूशन का ज़्यादा बड़ा था और जो नॉर्मल था वो स्मॉल था. तो ये डेल्टा टी बी जो है वो आपका बेसिकली क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट of your boiling point of the solution minus boiling point of the solvent in pure state. So this is what this thing will be your elevation in boiling point. तो ये जो डेल्टा टी बी है ये आपका क्या है, elevation in boiling point. मीन्स जो राइज हुआ आपका बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, बिकॉज यू आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट. Now let's focus on a particular derivation. एक्चुअली क्या होता है ना, ग्राफ प्लॉटिंग होती है, जैसे हम ग्राफ प्लॉटिंग में डिफरेंट केसेस में देखते हैं. लेट्स फोकस ऑन इट. नाउ दिस इज़ द ग्राफ प्लॉटिंग. वी आर सीइंग डिफरेंट प्रेशर्स. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 अलग प्रेशर है, अलग प्रेशर है. दीज आर द टेम्परेचर्स. दिस टेम्परेचर इज़ देयर एंड T1 इज़ अदर टेम्परेचर व्हेन यू आर होल्डिंग अ solvent and non-volatile solute. So again you are seeing T2, it's another solution. So it's depend कि what graphs you are using, and you just see there are triangles also been there. We are getting a straight line in case of pressures, and a curve is been there when we are seeing about the solvent solutions temperatures. So curve is been there. So let's focus on it and let's see certain triangles. So just see the abbreviations what are given to us, and let's focus on AB1. So ABD, this triangle we'll focus and we'll just calculate about the temperatures and about the pressures, and we'll also focus on ACD, ACE, this triangle and this triangle we see. In these two triangles we see what can come. So you are seeing the curves. The curves are taken to be approximately straight line,
So in triangles we'll focus triangle ABD is similar to triangle ACE. So in these triangles we see that AB was equal to AD upon AC AE. So let's first of all focus on AB, what we are getting, then we'll see that how we can put. So when you see it, you'll get this thing. Now again I'm telling derivation is there in a course, but it has been not been asked from many years, but this year we cannot assume it. So this is the difference that is coming. तो डेल्टा TB1 और ये डेल्टा TB2 आ जाएगा, ऐसे ये प्रेशर से रिलेटेड आ जाएगा, ये P1 का आएगा और डेल्टा P2 का आएगा. ठीक है, तो दीज आर द एलिवेशंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन 1 एंड दिस इज 2. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution 1 and 2. These are from the graphs. ठीक है, and these are the pressures, vapor pressures. So lowering in the vapor pressure, भी lower हो गया था ना vapor pressure जब rise, तभी तो आपको temperature बढ़ाना पड़ रहा था. For solution 1 and 2. नाउ व्हाट डू यू गेट, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, है ना. तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग द वेपर प्रेशर यू आर गेटिंग. तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, राउट्स लॉ से. अब राउट्स लॉ को अगर इफ यू रिमेंबर अबाउट राउट्स लॉ, दैट राउट्स लॉ फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इफ यू फोकस, then we come across that P delta P upon P naught is equals to N2 upon N1. तो डेल्टा P आपका आ जाएगा P naught N2 upon N1. This thing you can have. This thing also you can have a thing in you can say in proportions forms or in ratios form. Is directly proportional, what we get it, N2 upon N1. Now write down this thing, delta P is directly proportional to, you can put values of number of moles can be changed into weights upon molecular weight. And these two things are equal, you know na, delta TB is directly proportional to delta P. So in place of delta P you can write down delta TB is directly proportional to this thing, the same formula which is written on the top you can write down here. When you remove this proportional sign you will get a constant. We always see when we are removing this thing we are getting a constant. We will get many things over here, I am telling you what things you will get. So first of all you write down this thing, W2 M2 into M1 upon W1. but the thing is that M1 जो आपका molecular mass है, molecular mass of solvent is also constant. So this thing can be applied. You will get this. If you resemble this thing you will match with one thing after that, and you will see that I'll change this entire derivation into a very different concept. So first of all you just focus on it, that what K is. K कुछ है, K is boiling point constant. ठीक है, and first of all you multiply, उसके बाद आप multiply and divide by 1000. ठीक है, so this can be written in this manner. Now one thing you will get this scenario that ये जो कंडीशन होती है K upon 1000 जो होती है वो KB के बराबर होती है. ये होता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हटा दो कांस्टेंट, और इसको हम इल्ब्यूस्कोपिक
कांस्टेंट भी कहते हैं. डेफिनेशन हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड मैनी टाइम्स. दिस थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इट. बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, नाउ यू गेट दिस थिंग. एंड वन मोर थिंग यू विल फोकस ऑन इट, दैट दिस इज़ रिलेटेड टू द मोलैरिटी ऑल्सो. तो आपको कुछ चीज़ें इसमें, ये पोर्शन, तो ये पूरा पोर्शन अब आपका के बी के बराबर हो गया. अब आपका ये पोर्शन बचा. अगर इस पोर्शन को आप रिजेंबल करिए, अभी हम ये लिख देते, नहीं तो आप कहेंगे कि मैम ने तो बहुत जल्दी भी करा दिया. सो W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, this is related to your molality. This is again a new formula. Basically you will needed this formula, and sometimes this rare of the rare case, ये दो important होते हैं. So you get this formula also. The rest of the formulas has been not required, only these formulas has been required. So I think this is elevation is boiling point is clear to you, and please focus on it, and we'll focus some numericals also. We'll see to it there are many things also, sometimes they ask, but formula is been coming in the competitive point of view, is not here, but still I am writing that formula so that you can remember that sometimes KB is not given to us. तो KB के लिए हम, वैसे तो हमें तो दिया जाता है, there are formulas are given to us. I am writing down that formula also. फिर KB is equals to RT naught M1 upon 1000 into delta H. These two formulas से भी you can calculate the KB. This is rare of the rare case. अभी तक 10 years में आया नहीं है कि KB का मांगा गया है कि how to calculate it, but still you can have these formulas if they are not giving you KB, but they are giving you KBs in ISC, तो they are giving you, है ना. तो you have these formulas where you can put and calculate the value of KB, and you can calculate, है ना. ये मैं सिर्फ दिया रखा है precautionary आपको. These are the abbreviations and the details of it, so please learn them also. If it asks, then you should have these things, that what are they, because if you will not remember them, you cannot put the values in the numericals. So in this video I am just talking about the derivation of elevation boiling point, and I have discussed about the details of it. In the next video we will discuss about the numericals in elevations in boiling point. Important topic hai, numericals are asked, and definitions, what is elevation boiling point, what is helioscopic constant, these two definitions are there. So that thing you have to remember.